Assalamu alaikum all. So this is the last week for the semester, and today is the second last class. So inshallah, we're almost there. So today we gonna continue our discussion on oblique incidence, and we will go from the concept of oblique incidence towards the waveguides, parallel plate waveguides. So mainly, primarily today's and next class will be on waveguides. Acha, quickly, a first small concept before we move on to the concepts of waveguides. Uh, Last time, one of you asked how these amplitude, these reflection coefficients and transmission coefficients look like in the form of plot. So I sent you that MATLAB figures. I'm sure all of you must have seen that. For example, at 80s, I forgot to mention these reflection coefficients, which we determined their relationships. These gamma TE, transmission TE, gamma TM, TM. We call them as Fresnel coefficients. All right. So there's a another name for them, Fresnel coefficients. Acha, let's look over this figure first. You can see that as we change the incidence angle, obviously there the coefficient value is changing, and that makes sense because theta I is changing, theta t will change as per Snell's law, and you will have all those new calculations. One thing which is very a useful point here is that you see this thing, that this gamma Tm, or transmission, this reflection coefficient for the Tm, for an angle, it becomes zero, right? For some angle. Obviously, for this, I assumed, I think N1 and N2 is 1.5. So I coded them in the form of refractive indices. So for these refractive indices, we see that gamma Tm becomes zero, and there is no point where gamma Te becomes zero. And similarly, if you look the other way around, that there is an angle again for which this gamma Tm is zero. Roughly, even N1 is greater than N2. But again, there is no angle, incidence angle, for which gamma Te is zero. And obviously, which point is this one? Can anybody quickly tell me which point is this one? कोई बताएगा which one is this where both of reflection coefficients become one, afterwards they stay as one? So after this incident angle, which point is of the incident angle? What the technical name for this incident angle? Can anybody tell me? No. Internal reflection. Yeah, so this is total internal reflection. That's a critical angle, and afterwards you have the total internal reflection. Acha, Joe point which we I'm interested here is this point. Okay, what the angle which represents that gamma Tm becomes zero, it means that for some incident angle, this could be zero, and this can never be zero. And you can see this thing, math is straightforward, that okay, I equate this equation to zero, and I will figure out, and I will try to write this equation for theta I, and I will find a relationship, and that incident angle would be these two. And similarly, if I try to do that here, I will not find any relationship, and you can look over the math in the book. So if we do this math, equating this relationship to zero, we can figure out that if sine theta I follows, that theta I is that angle which is represented by this equation, you know, and we call it a special name, theta I, or we call it as a Brewster angle. That incident angle for which this gamma Tm becomes zero is known as the Brewster angle. And there is a more even simplified form for this.
is tan theta I is equal to n2 over n1. So basically, if you want to figure out a Brewster angle for the two media, at the interface, when let's say this is n1 and this is n2, and there's a reflected, there is incident wave, and you want to find out at what angle the reflection coefficient for Tm would be zero. It's a simply this equation. Acha, what does it mean? What does it mean? Now, recall the discussion that a general polarization will have both TE and TM components. Correct? You can resolve any electric field vector into two perpendicular components. They're represented by TE and TM components. So, if a wave hits at a Brewster angle, at a Brewster angle, which is given by this equation, theta b is equal to tan inverse n2 over n1, or you can figure out from this equation too. If the wave hits at a Brewster angle, then the reflected wave will be purely TE. There will not be any TM component present in that reflected wave. What does it mean? What does it signify? क्या ये चीज शो करती है? कोई मुझे बताएगा? Can anybody tell me that if we eat up a TM component from an electromagnetic wave, we will have only TE. So in terms of polarization, what does it represent? Yes, anybody wants to remind us? No. So remember, TE and TM are individually, they are linearly polarized components. So TE alone is a linear component, just like a horizontal or vertical component, and TM alone is a linear component. So it means that any polarization which hits an interface at a Brewster angle, the reflected wave will be purely linearly polarized. So this is kind of a way of making linear polarization out of an arbitrary state of polarization input. So Brewster and these lasers typically, these lasers, which these pointers or any other, many lasers, they try to orient the internal mirrors. In a laser, you have two mirrors which traps the light inside. So they try to orient these mirrors at Brewster angles so that the output polarization is a purely linear wave. So that's the application of Brewster angles. सर जी, सर जो इंसिडेंट वेव का टीएम कंपोनेंट था उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? जो इंसिडेंट वेव का टीएम कंपोनेंट है ना, दो दो काम हो रहे हैं। एक तो ट्रांसमिशन है और एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में देयर विल नॉट बी एनी टीएम कंपोनेंट। ट्रांसमिशन पे कोई कथन नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं वायलेट होगा। ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्शन में नहीं पावर जाएगी तो ट्रांसमिशन में चली जाएगी। दैट्स द पॉइंट। ठीक है? सो ट्रांसमिशन में इट कुड बी एनी प्रोपोर्शन। ठीक है? डज दैट हेल्प? ठीक है? यस सर। Okay, so that's thing. Acha ji. So let's move on after this Brewster angle concept. Let's start. Let's look over these waveguides. Like in waveguides, को हम इसी से we will build these waveguides from the concept of oblique incidence. We can solve Maxwell's equations. We can solve Maxwell's equations and arrive at the same conclusions. But in the interest of time, I used to do Maxwell's equations in earlier offerings. But here, in the interest of time, I will build the theory and understanding from these oblique incidents जो हमें समझ आ चुकी हुई है. ठीक है? So let's look over it. So what I'm gonna do is, अभी वेवगाइड को हम डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन हम बिल्ड करेंगे एंड वी विल रीच टू द वेवगाइड्स टुडे. सो लेट्स से कि I have this a metallic conductor, right? A metallic conductor, and a wave comes at this metallic conductor,
have this, इस picture को आप लोग draw कर लें, because I'm gonna refer to that picture again and again. So this is a metallic conductor, and there would be an incident wave. Let's call that as a theta I, and there would be a, oops, there would be a reflected wave. ठीक हो गया? There would be a reflected wave जो कि again उसी एंगल पे होगी जो incident angle है, and there won't be any transmission because it's a perfect conductor. Pure conductor, कोई transmission नहीं है, just a reflection and incidence on oblique incidence. And let's set up the coordinate system. What I'm going to do, I'm calling this one as x, this one as z, and out of board as y. All right, so that's oblique incidence. You are seeing it, but here the difference is this, that there is no transmission, only reflection, incidence and reflection. So what I'm going to do is that I am going to start, because you know that we need to consider the polarizations differently. So let's look over the TE component. So TE component is straightforward. This is EI, ठीक है, and this is EI, ठीक है, and this would become and this would become HI. We have seen that. I'm not gonna sorry, this should be ER. So this is ER, and so and this becomes HR. So general picture of our oblique incident. So let's, I'm not going to explain this incident field because we have already written it. So I'm going to write it very quickly, and I'm sure you all understand this, that how this equation came, because we discussed in the earlier class. So EIZ would be EI E minus J beta. It's a lossless medium, and this is the medium lossless. The beta is there, and this is equal to minus x, the k vector, a beta vector, which we used to write, plus z sine theta. So this is the same one as we wrote last time, and it's a TE in the AY direction, right? And similarly, in volts per meter, and similarly, this magnetic field xz, this would become EI over eta, and minus sine theta I, ax minus z cos theta I, a z, e minus j beta, minus x cos theta I, plus z sine theta I, in amps per meter. That's magnetic field. ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि ये perfect conductor है, your reflection coefficient will be what? -1. Fully reflection होगा वापस उसी angle के ऊपर. So your reflected electric field, so your reflected field is equal to excuse me, minus EI E minus J beta, x cos theta I, plus z sine theta I, ay volts per meter, right? अभी कोई नई चीज नहीं है. We're gonna build ये चार fields different पुराने तर्ज के ऊपर हैं, and we're gonna build the knowledge after this. So this HR would be EI over eta, sine theta I ax, minus cos theta I e z, e minus j beta, x cos theta I, plus z sine theta I amps per meter. So when you are studying this, make sure that you understand how these equations come. It's just those vectorial way we discussed
I think a couple of classes ago. ओके अच्छा, अब इंट्यूशन क्या कहती है? क्योंकि परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, वी नो दिस थिंग, ये प्लेन वेव्स हैं, राइट? प्लेन वेव्स हैं, these are all plane waves. So what is going to happen that these waves, remember, थोड़ा सा build करते हैं. Remember when the normal incidents happen at a perfect conductor, there would be full reflection back and it would be pure standing wave, right? Now अब oblique है, oblique है और ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है. इंट्यूशनली हमें नजर आ रहा है कि पॉसिबली दैट इन दिस एक्स एक्सेस there would be standing waves again as in the normal instance. x axis के अंदर ही standing waves होंगी, लेकिन अब ये obliquely जा रहा है तो wave propagate भी कर रही है. So there needs to be some, you know, some along some axis it would be standing wave, along some axis it would be traveling wave, and something like that. And we're going to look over it mathematically, right? That should make sense to you because obviously physically the wave is propagating in some direction, or obviously this reflected wave बेसिकली होगा क्या, इस रीजन के अंदर जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट वुड बी सम ऑफ incident and reflected electric field, because continuously electric field, incident electric field is coming. It's like the tap is open continuously, the water is flowing and continuous reflection, and they will add up to produce the total electric field in this region. So the total electric field in this region will be simply E total, इसको E1 कह देते हैं, in the region 1 is equal to EI plus ER, दोनों का sum होगा, ठीक है? And you can see this thing, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है. I'm gonna, so you can see this thing, मैं आपको यहाँ पे roughly explain कर देता हूँ. You can see this thing कि ये वाली term common है दोनों के अंदर, राइट? ये दोनों माइनस जी साइन थीटा है, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बिकॉज माइनस माइनस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो ये सेपरेट है और ई आई कॉमन है. सो बेसिकली वंस यू राइट दैट, you can easily see this thing that this becomes ei, the magnitude. और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत मैथ निकलेगा एंड आई एम श्योर यू विल रियली एंजॉय दैट. माइनस जे, वो मैंने बीटा जी साइन, अपने इक्वेशंस को देखो, ई माइनस जे बीटा जी साइन थीटा आई को मैंने कॉमन ले लिया है, ई आई प्लस, इस टर्म को मैंने कॉमन लिया ई आई प्लस ई आर में से, जो लेफ्ट है वो ये रह जाता है ई प्लस जे बीटा एक्स cos theta I minus E minus j beta x cos theta I. This is what is left. And you can see this thing. If I do this thing, divide by j2 and multiply by j2, this becomes sinusoid. So E1 actually is equal to j2 EI sine beta cos theta I x, और ऑब्वियसली यहां पे ए वाई भी था, e minus j beta z sine theta I a y. That is the electric field. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको कौन मुझे इंग्लिश में इसके ऊपर स्टेटमेंट बताएगा? बिकॉज यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड is it's a vector. It should have magnitude, it should have a phase, it should have a direction. और phase means कि wave किस direction के अंदर propagate कर रही है, right? So कौन बताएगा मुझे इसको देखते हुए कि क्या हो रहा है? Can anybody quickly? Time कम है, so I need a quick volunteer who will attempt to explain this electric field in purely English, no math. Yes, come on, I want someone. जल्दी, शाबाश, को डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको फिक्स कर लेंगे. आई नीड अ वॉलंटियर हु वांट्स टू डू दिस. लेट्स सी, फिर मैं खुद ही पिक करूं. सो ऑलराइट, आई विल पिक रोशन टुडे. सो रोशन,
यस, यू देयर? सो रही है रोशन? सर इधर ही चलो चलो बताओ फिर मुझे इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैन यू एक्सप्लेन दैट? हम इस तरह एक्सप्लेन करो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपिगेटिंग in this direction, its amplitude is changing in this direction, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन ये है। कैन यू से दैट? the electric field की direction is in AY ठीक है, direction. It's propagating in um X नो, and नो, व्हाई यू से एक्स? wait. जो प्रोपिगेशन होता है वो फेस के साथ लिंक्ड होता है। सो प्रोपिगेशन कहां पर हो रही है? तो प्रोपिगेशन इज, आप देखो ना, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे यूजिंग फेजर टर्म, ई जे ओमेगा टी लगाओगे तो ई जे ओमेगा टी माइनस बीटा साइन थीटा आई जी ये आएगा। सो प्रोपिगेशन किस डायरेक्शन में होगी? जो फेज वाली टर्म होती है। सो इट्स प्रोपिगेटिंग इन द जी डायरेक्शन। डज दैट मेक सेंस? Oh, sorry, sir, I got disconnected. Okay, so the phase term dictates a propagation. So it's propagating in the z direction, and its amplitude is changing in the x direction. So weird सी wave है। दिमाग में पिक्चर बनती है आप लोगों की। थिंक जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एवेनेसेंट वेव को डिस्कस किया था, या वो जो जहरा ने पॉइंट आउट किया था सरफेस वेव्स को, इट्स अ सिमिलर थिंग बट थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन थिंक लाइक दिस, it's a standing wave in the x direction and it's a traveling wave in the z direction and electric fields in the y direction। और अब इस पिक्चर को गौर से देखो, वही जब हमने शुरू में बात की थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 है, so there is a purely standing wave, everything will reflect back in the x. Up there is an angle, so there is a combination of a standing wave, but standing wave is in the x direction, right? And the wave is traveling in the z direction. कोई बात नहीं, अभी शायद ना समझ आ रहा हो, लेकिन I'm gonna show you animations and you will have full understanding ये हो क्या रहा है। बट राइट नाउ मैथमेटिकली इसको देख सर लो। जी जी बोलो। सर दोबारा बता दें E1 है क्या? क्या चीज? से सर ये E1 क्या चीज़ है? आप व्हाट इज E1? E1 E1 is the total electric field EI plus ER, because इस रीजन में EI और ER साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सम होगा। ये वही बात है जब आप लोड के ऊपर होते थे ट्रांसमिशन लाइन में, इंसिडेंट वोल्टेज आती थी और रिफ्लेक्टेड होते तो आप वोल्टेज को कहते थे VI प्लस VR है। ये वही चीज है एग्जैक्टली, लेकिन इन द यस सर। मोर वेव फॉर्म। ऑलराइट। और सर ये हम ये सारा कर क्यों रहे हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं इसका टॉपिक क्या है? अच्छा, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने अभी वेव गाइड I'm going to formally define that. This is what we are looking at, that we are looking at oblique incident on perfect conductor। एक परफेक्ट कंडक्टर पे जब एक वेव हिट करेगी तो क्या होगा फील्ड्स के साथ, और उसकी एप्लीकेशन एक वेव गाइड्स व्हिच आई एम गोना रीच देयर। सो राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेव बिहेवियर when a plane wave hits a perfect conductor at oblique incidence। so उसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं और फिर पावर फ्लो को देखते हैं और फिर कुछ चीजें उसको से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक ऑलराइट। Sir, जी, sir, except for the direction, EI is equal to ER, right? EI is equal to ER? No, it's a vector. Both are not equal. Sir, except obviously not the direction. So the vectors are not equal to each other, but the magnitude maybe is equal because there's no transmission. Yes, magnitude you can say that they are equal. In a yeah, it's a yes, you can say that, yes। obviously एक flip sign and negative sign लगा हुआ है उसके साथ। ठीक है? Okay, so similarly
we can write H1 as Hi plus Hr, right? Magnetic field in the region 1. Uska bhi simple sa algebra, and I'm going to write the last expression. इसी लाइंस के ऊपर अलजबरा जो हमने किया है वो दो एक्सपोनेंशियल्स आपस में साइनोसाइड बन जाएंगे, लेकिन आई एम गोना राइट द लास्ट एक्सप्रेशन बिकॉज H has two vectorial components, sine beta cos theta I x ax plus cos theta I cos beta cos theta I x a z, and यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है e माइनस j beta sin theta I z amps per meter. That's the magnetic field. ठीक है, अब naturally we become interested that what is the pointing vector, यानी कि real power flow कैसे हो रही है. So वो हम कैसे निकालेंगे? We know that half real E cross H conjugate, E1 cross H1 conjugate. Once we do that, you know, E1 आपके पास पड़ा हुआ है, H1 पड़ा हुआ है, इनको just multiply करना है और conjugate H को करके. So once we do that, this is equal to real J 2 EI square over eta sine 2 beta x cos theta I cos theta I ax. एक ये टर्म है प्लस दूसरी टर्म मैं इसके नीचे लिखने लगा हूं. दूसरी टर्म है 2 e I square eta sine square beta x cos theta I sine theta I a z watts per meter square. अच्छा, बस अब ये बस एक बड़ी इक्वेशन मैंने लिखी. अब इसके बाद we all gonna interpret these results with small equations. So you can see this thing. जब मैंने power average ये मैंने pointing vector निकाला है, you can see this is an imaginary term because there is a j is lying there. ठीक है, और this is in ax direction. So that perfectly fits our description that ax direction के अंदर कोई real power flow नहीं हो रही, कोई traveling wave नहीं है, because power flow जो होता है, यानी power जो transmit होती है, power जो move करती है, that is through the traveling wave, and it has to be real. So you can clearly see that in the ax direction there is nothing like that. Achha, now in the az direction you can see the whole power is actually going in the az direction. In the az direction के अंदर basically actually आपकी power transmit कर रही है as we anticipated at the first when we were looking over the picture. अच्छा, अब यहाँ पर I think I'm sure बहुत सारी confusions हो चुकी हुई हैं. But I'm gonna fix those confusions. Just hold on for a few more minutes. क्योंकि इसका आई थिंक जो कंफ्यूजन वो इस सेंस में है कि ये आई एम श्योर आप लोगों से विजुअलाइज शायद नहीं हो रहा दिमाग के अंदर. इज दैट, या किसी के साथ हो रहा है? हु कैन विजुअलाइज दिस फिगर इन हु कैन विजुअलाइज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन हिज हेड? कोई कर सकता है विजुअलाइज कि एक्चुअली किस किस्म की वेव ये ट्रैवल कर रही है? So, all right. So I'm going to tell you right now. I'm going to attempt that. So let me get this wire. So, एक second. So you can see एक बड़ी clear बात है. इसको वापस देखते हैं. इसको, ये जो हमारा है. That there is, in the x direction, there is a standing wave. Right? And in the z direction,
there is a traveling wave. अब हो गया क्या, इसको देखते हैं गौर से। और ये स्टैंडिंग वेव है, ऑब्वियसली इट्स अ साइनोसाइडल। सो अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आप ये टुवर्ड्स, ओके इट वुड बी हार्ड, लेकिन कोशिश करते हैं। सो लेट्स से ये मैंने स्टैंडिंग वेव बनाई है, नजर आ रही है आप लोगों को? चलो ऐसे दिखाते हैं। तो दिस इज द स्टैंडिंग वेव, राइट? ये नजर आ रही है आपको स्टैंडिंग वेव, करेक्ट? यस सर। ओके, सो ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया टुवर्ड्स द स्क्रीन, यानी कि ये स्टैंडिंग वेव इज इन द एक्स डायरेक्शन। जो एक्स है ना वो ये है, टुवर्ड्स यू। Does that make sense? Does that make sense? कोई इंटरेक्टिव हो जाए मेरे साथ, यही हो जाए जो है। Yes, sir. Who was this? Who was this? सैफ। सैफ। ओके सैफ, ठीक है। ये पता चल रहा है, ये स्टैंडिंग वेव इज इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यस सर, पता लग रहा है। पता चल रहा है। अब जी डायरेक्शन कौन सी है? ये ट्रेवल कर रही है जी में, लेकिन स्टैंडिंग वेव एक्स में है, लेकिन ये ट्रेवल जी में कर रही है। सो दिस इज द इंट्यूशन। और इसका ये एम्पलीट्यूड है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर ये एक्स है, ये जी है, तो वाई, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वो इस डायरेक्शन में ऊपर है। Does that help in understanding and visualizing what is going on? So this is an infinite standing wave x direction के अंदर जो ऐसे travel कर रही है z में, amplitude Yes. और उसका vector वो है। So that's the intuition and that's the visualization. Does that make sense? Yes. Yes sir, it does. किसी और को कोई confusion यहाँ पर? क्योंकि अब fun start होने लगा है after understanding this thing. Any confusion with anyone on this? सर एक कंफ्यूजन है बस सर, आप अगर वो फिगर पे जा सकते हैं दोबारा जो आपने बनाई हुई है। Let's go back there. जी अब सर हमने कहा है कि द वेव इज ट्रैवलिंग इन द जी डायरेक्शन सर, बट वो तो एक एंगल पे आ रही है ना, लेकिन यूजफुल कंपोनेंट जी में है। एक्स अच्छा, ठीक है। तो एक्स में तो यूजफुल पावर नहीं है। एक्स कंपोनेंट इज अ स्टैंडिंग वेव कंपोनेंट, जी कंपोनेंट इज द अलोंग द जी डायरेक्शन, जो कि यूजफुल जा रहा है। या दैट्स, आई थिंक दैट्स सही है मोर, सर। ठीक है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सी। सो बेसिकली हम ये क्योंकि ये नजर भी आ रहा है, ये हमने अब मैथमेटिकली हमने इसको फिगर आउट कर लिया है कि पावर एक्चुअली जो यूजफुल पावर वो एजी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। This pointing vector is telling me that useful power is in the az direction. So हम इसको I will write that in x direction there are only standing waves. Sir, your screen is stuck. Oh, all right. Can you see my screen now? Can you guys see my screen now? यस सर। Okay, so in x direction there are only standing waves, all right? And in z direction you're basically जो हमने वो पर किया है पॉइंटिंग वेक्टर या टाइम एवरेज्ड पावर प्रोपेगेट्स, ठीक है। ये हमें यहां से पता चल रहा है, हमारी इंट्यूशन भी यही हमें बता रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। Now what we can say this thing is that कि अगर मैं इसको देखूं सिर्फ इसको, all right, if I look over it only, ये वाला कंपोनेंट जो है, नहीं पावर में नहीं, आई वांट टू सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, एक ही बात है, दिस वन। मेरी वेव जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जीरो कब होगी? जब ये कंपोनेंट जीरो होगा, करेक्ट? ठीक है, व्हेनेवर दिस कंपोनेंट बिकम जीरो आई हैव अ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जीरो कब होगा? सो
okay, I'm gonna write that ताकि point full make हो जाए. That electric field is 0 whenever sine beta cos theta I x equals to 0. ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. Which means that when beta cos theta I x, एक सबस्क्रिप्ट m डाल रहा हूं, is equal to m pi. Whenever this condition is true, you will have a zero electric field. यानी कि वो जो स्टैंडिंग वेव मैंने आपको शो की थी, this one I'm gonna show you back. Oops. This one, ये जो standing wave है, you know, this is the standing wave which so this is, you know, this has become 0, you know, उन points के ऊपर 0 0 है जहां पर ये वाली condition true होती है. ठीक है, the standing wave. So और हमारा कौन सा वेरिएबल है जो इसको डिक्टेट करता है? This xm. Whenever xm is equal to m pi, whenever xm is equal to m pi over beta cos theta I, हमारा नल आएगा. ठीक है, और बेसिकली ये डिक्टेट करता है लोकेशंस ऑफ नोड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. ये लोकेशन ऑफ नोड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देने लगा हूं. सारी वेवगाइड की थ्योरी जो है ना, you can understand from this very basic equation and you will see how, you know, जितनी मर्जी complicated waveguide हो जाए. Sir, can you repeat how we got this equation? So if you look over this electric field, ये टॉप के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था रीजन 1 के अंदर. उसके अंदर जब ये वाला टर्म 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. ठीक है, sin beta cos theta x. So I said, okay, electric field is 0 whenever this one is 0. मैंने उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकाल लिया in the region 1. And this means ये क्योंकि sin का आर्गुमेंट है, sin 0 कब होता है? m pi के ऊपर होता है, which means that beta cos theta xm is equal to m pi होगा. m could be any integer 0 1 2 3. इसका मतलब ये xm is equal to this. अच्छा, अब मैं यहाँ पर फिगर दोबारा बनाता हूँ. ये थी हमारी फिगर, राइट? और ये मेरा x था और ये मेरा z था. ये मेरी इंसिडेंट वेव थी और ये मेरी ट्रैवल वो थी रिफ्लेक्टेड वेव थी. अब इस डायरेक्शन के अंदर मैं जा रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ. इस डायरेक्शन के अंदर मेरे स्टैंडिंग वेव्स हैं. ठीक है, जैसे मैंने बनाया था. सो ये जो डायरेक्शन है ना, दिस इज x. इसमें लेट्स से दैट, यू नो, लेट्स से दैट, ओके मैं दोबारा बनाता हूँ. ठहर जाओ, ऐसे बनाते हैं. उप्स, देखो वाला वेव नहीं सही बन रही मेरे को. ये ठीक है. अब आप ये देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बिकॉज x इज इक्वल टू 0. m जब 0 होगा तो x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0. फिर उसके बाद when m इज इक्वल टू 1, यानी कि जब ये वाला आर्गुमेंट पाई हो जाएगा तो एक और 0 आएगा, वो ये वाला पॉइंट है. फिर उसके बाद यू कैन सी 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 5 पाई. सो फिलहाल हम लोगों ने जो ये परफेक्ट कंडक्टर है, इसमें एक किस्म का ये इन्फिनिट स्टैंडिंग वेव है इन द एक्स डायरेक्शन. यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को? इट्स अ सिंपल इक्वेशन एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द लॉजिक हियर ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है जी सर, थीटा आई ही अगर पाई बाय 2 हो जाए तो व्हाट वुड हैपन देन? थीटा आई पाई बाय 2 होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा. थीटा आई पाई बाय 2 होगा तो फिर xm इन्फिनिट, यानी कि वो कहीं बहुत दूर होगा. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट थीटा आई फॉर टाइम बीइंग. लेकिन फॉर एनी थीटा आई,
for any theta I, there will be positions along x जहां पर null होगा, ठीक है। और रिमेंबर वो जो मैंने बनाया था, ये वेव स्टैंडिंग वेव इस तरह है और ये इस तरह प्रोपेगेट कर रही है इन द z डायरेक्शन। टोटल क्या है देखो, वो सैफ ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, जैसे ये ई आर है, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड, टोटल यानी कि इंसिडेंट भी है और रिफ्लेक्टेड भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट सम जो है ना वो स्टैंडिंग वेव है जो कि ऐसे प्रोपेगेट करी इन द z डायरेक्शन। ठीक हो गया? डज दैट मेक सेंस? ये पिक्चर क्लियर है आप लोगों को इनफ? यस सर। ओके अच्छा, अब मजे की बात ये है कि now the concept of waveguide is now going to arrive that मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर इधर रख दूं, परफेक्ट कंडक्टर, क्या होगा? यानी कि बाय सम हाउ मैंने एनर्जाइज किया अपने इसको, बाय सम हाउ मैंने ऑब्वियसली इंसिडेंट है, मैं सम हाउ यहाँ पे मैं कोई अपना कोई बिठाया हुआ एलियन, ही एनर्जाइज दिस वेव गाइड, दिस इज दैट वेव केव, एंड फिर ये यहाँ पर एक और परफेक्ट कंडक्टर है, तो क्या होगा इसके साथ? ओके, आई नीड टू बी इंटरेक्टिव, लेट्स सैफ यू कम बैक विद मी। यस सर। तो व्हाट सर वुड अंदर हैपन? वाली wave इतना ट्रैप हो जाएगी अंदर। अभी ट्रैप का मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ, ये एक हम्प था, ये यस एक सर। हम्प को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब क्या कहती है इंट्यूशन? दैट दिस हम्प विल स्टार्ट इसी तरह प्रॉपरेट। इसी तरह, और ये क्या एग्जैक्टली होगा सर। बेसिकली, दिस वुड बी यूं बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, करेक्ट? यस सर। यस ठीक। सर। अच्छा, अब अगर मैं मुझे ये नहीं, आप कहते हो कि सर आपने इधर क्यों रखा है, आप इधर रख दो, लेट मी चेंज द कलर, सो व्हाट वुड हैपन देन हियर? व्हाट वुड हैपन देन? तो स्टैंडिंग वेव उसी तरह राइट साइड की तरफ प्रोपेगेट करेगी और वो इसी और तरह। स्टैंडिंग वेव के अंदर दो हम्प्स हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। और अगर मैं इधर रख दूं, it would keep on doing, basically what I'm doing, I'm increasing the m, this was for m is equal to 1, this was for m is equal to 2, and this was for m is equal to 3, and so on and so forth. जितने m बढ़ाता जाऊंगा उतने हम्स आते जाएंगे बीच में, something on those lines, right? यस सर। ठीक है, लेकिन एक बात ये है कि ये एनर्जी मेरी जो है, वो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रैप हो गया है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी जो दो दो कंडक्टर्स पड़े हुए हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर, राइट? ऐसा ही है ना, यानी कि इन ए सेंस दीज आर ओके। सो बेसिकली लेट मी एक्चुअली, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई होप वी आर इन द क्लास, आई एम नॉट श्योर कितना जस्टिस हो रहा है। ये हैं दो कंडक्टर, परफेक्ट, ठीक है। अब ये बुक को तो मैं दो नहीं पकड़ सकता, समझो कि वो बुक मैंने ऊपर रखी हुई थी, वेव क्या हुई है, यहां से निकली, ऊपर गई, वापस आई, ऊपर गई, वापस आई, और इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। सो बेसिकली जो कंडक्टर की सरफेस है ना, इट्स एक्टिंग एज अ गाइड फॉर द वेव, राइट? सो बेसिकली दिस डायरेक्शन is acting as a guide for the wave, कि वो enforce कर रहा है कि वेव ने इस डायरेक्शन के अंदर प्रोपिगेट करना है, प्रोपेल करना है, इस डायरेक्शन के अंदर प्रोपिगेट करना है, लेकिन इट इज प्रोपिगेटिंग लाइक अ स्टैंडिंग वेव इन दैट वन एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेव गाइड। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी मैं आपको देता हूं, वो बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े भी क्या, वाटर पाइप है, सबने देखा होगा, पानी का पाइप घर में सबके होता है, उसको जैसे मोड़ो तोड़ोगे पानी उस तरह मूव करेगा, सही? दैट इज ए वाटर गाइड एक्चुअली। So the waveguide exactly does the same thing, that it helps to guide the waves. अब आप बोलोगे अच्छा ये आया कहाँ से? Why we are studying waveguides? We already studied transmission line and stuff like that. Transmission line is enough for carrying power. So the problem with the transmission lines is that they do not work well at higher frequencies because of the skein effect and other losses which kicks in. They become they become highly inefficient for high frequencies. So we need to go towards the waveguides. So this is what I am discussing, a very
simplest form of a waveguide is a parallel plate waveguide. This is known as a parallel uh, parallel plate waveguide. This is known as a parallel plate waveguide, where basically you have these two parallel plates which are acting as a guide for the wave. Or you can think like another way of thinking is these mirrors. ठीक है, और उसके अंदर ये जो वेवगाइड का ऑपरेशन है, पैरेलल प्लेट वेवगाइड का ऑपरेशन इज फुली एक्चुअली डिक्टेटेड बाय दिस इक्वेशन. इसको हम मजीद प्रोब करते हैं. ठीक है. So I think let me do few more things here, and I hope this would make more sense. Okay. So let me actually formally write it so that you guys don't mess this up. So what I told now, when we place the other conducting plate at xm, what would happen? That nothing, that no no properties of standing wave or standing wave or traveling wave will change, right? However, we confined the space between two plates, all right? And this is a waveguide operation. Waveguide, right? Waveguide, two separate waves. Okay, so इसका एक और मैं टेक्निकल सेंटेंस एक लिख देता हूं. The wave propagates in the guide direction, right? जो कि हमारे केस में z है, and while it varies spatially in the transverse direction. ठीक है. So इस इक्वेशन को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं. This one, xm is equal to m pi over cos theta I beta, because this equation has all the information about the parallel plate waveguide. So let's interpret this equation more. So एक तो इस equation को I can write in the form m, because beta is equal to 2 pi by lambda. So m lambda over 2 cos theta I भी कर सकते हैं इसको I can write, फिर v is equal to f lambda, I can write like this to 2f cos theta I, and obviously I can write it in the more general form where 2f and velocity is mu epsilon, which is the material filled inside this waveguide. I can write ये मेरी waveguide है, ठीक है, और this is mu epsilon filled inside, and this is what the wave is doing inside. So this xm is actually, if this is 0, the other is xm is lying there. अच्छा, अब मैंने कमेंट ये किया है, मे बी एक्चुअली इससे भी पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ. एक मैं आपको और दिखाऊं एनिमेशन. सो यू थिंक लाइक दिस, यानी ये इट्स रिलेटेड एनिमेशन. यू कैन सी दिस थिंग कि ये वेव जो है
This is propagating. ये एनिमेशन नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही. Did I share it? एनिमेशन Yes, नजर? sir. Okay. You can see ये वेव जो है ये इस तरह प्रोपेगेट कर रही है. ये इसमें एक्सएम के अंदर दो हम्प्स है क्योंकि एनर्जी है वो स्क्वायर हुआ हुआ साइन स्क्वायर, तो इसलिए वो नेगेटिव साइड नजर नहीं आ रही. तो ये दो हम्प्स हैं m is equal to, and you can see ये standing wave is doing like this, and this is propagating. Actually my son is here, let me take his help in order to explain. Idhar aao Hadi, idhar aao. Come on here, hold these books for me. Come is taraf out. Come on. So hold these two books for me. All right. No, like this. No, इसको ऊपर पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है. ये नजर आ रही है आपको? All of you can see these two books, right? Yes, बोलो ना. Yes, sir. Okay, अब ये हैं दो पैरेलल प्लेट्स और ये है so this is okay, this is the hump, ठीक है. ये स्टैंडिंग वेव है और this is traveling in the books को नहीं लाना, this is traveling like this. Yes, sir. बिल्कुल. That's how this is working. That's how this is working. और अगर दो हो तो this is ऊपर करो, this is like this, ठीक है. So that's how this is Yes, sir. happening. अच्छा, अब इसके अंदर I'm going to show you another animation. I have to use you. I'm going to show you another thing. So this is more clear picture जहां पर ये एक हम्प है और जो ट्रेवल कर रहा है. ओ नजर आ रही है एनिमेशन? ये नजर आ रहा है मैथमेटिकल ये फाइल? नो. Can you see this Yes, mathematics? sir, नजर आ रहा है. Yes, sir. Are another. So this is, you can see this thing. और ये t इसको कहते हैं, ये हम m is equal to 1 के लिए देख रहे हैं, we call the TE1 mode or something like that. I'm going to address that in the next class. लेकिन जब m is equal to 2 होगा, you can see oops, एक ही होया. Okay, this is not working. Okay, never mind. Acha, so let's come back to this equation now. और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद देखते हैं अगले 5-7 मिनट and then we'll stop. अच्छा, अब मैंने ये कहा है that this xm dictates like this, ठीक है. अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, इस इक्वेशन के अंदर इंसिडेंट एंगल भी है. या इधर चलते हैं. इस इक्वेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, इस इक्वेशन के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी अंदर जो है, इस इक्वेशन के अंदर cos थीटा I भी है, और and that dictates xm. So if any of these things change, then we will have a new xm, right? ये इक्वेशन हमें, ये मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, ऐसी बात है ना, राइट? सो अब मुझे ये बताएं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं. लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट, जो शायद नहीं कर सकोगे क्योंकि शायद मैंने आपको भी इतना अच्छा ट्रेन नहीं किया, बट नेवर माइंड. लेट्स से इस xm, एक मेरा ये xm है फॉर, लेट्स से x1 है फॉर m is equal to 1. उसके बाद लेट्स से सैफ आता है और कहते हैं सर मुझे x1 पसंद नहीं आ रहा, आई एम गोना पुट द कंडक्टर लाइक दिस. What would happen? Okay, पता नहीं मैंने सही पिक्चर ड्रॉ की है. लेट्स से ये एक मेरे वो स्टैंडिंग वेव थी, अगर एक कंडक्टर हो, राइट? दिस वाज द स्टैंडिंग वेव. इफ दिस द ओके, नेवर माइंड. If this is the standing wave and you have the conductor here, okay, now Saif came and he said I want to place the conductor here. What would happen now? What would happen? This is my equation. Xm is equal to m lambda over m lambda over 2 cos theta. नहीं, वो वाली लिखते हैं, m v over 2f cos theta I. What would happen? This equation needs to be respected. You have xm, पहले कुछ था, अब आपने बदल दिया है. So in the new xm, what would happen?
ये वेलोसिटी तो बदल नहीं सकती क्योंकि मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन आपने वही रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो आपका सोर्स यहां पे लगा हुआ था वो भी सेम है, वो भी बदल नहीं सकता। So what would happen that in order to create a new waveguide operation, having this different xm, your theta I needs to change. जो आपकी वेव जो है ना, ऑटोमेटिकली अगर it was doing some theta I first, for the new xm it will change the theta I. अच्छा, नहीं समझ आई बात, नहीं ना समझ आई? It's a casualty of online classes, but never mind. I will try to do justice. एक और मैं आपसे बात पूछता हूँ, किसी को वैसे बात समझ आई जो मैंने कही है? नहीं समझ आई, राइट? फिर स्टेडी स्टेट में जाके इस तरह होता है ना, पहले ट्रांजिएंट में कुछ और होगा, फिर आहिस्ता नहीं आहिस्ता स्टेडी नहीं स्टेट। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं आपसे, चलो लेट्स सैफ यू बी विद मी। यस सर। टॉर्च, टॉर्च का पता है ना आपको? टॉर्च, लाइट टॉर्च जो यस सर, पता है। ठीक है, लाइट जी टॉर्च, जी। उसके अंदर से लाइट निकल रही है, राइट? लाइट निकल रही है, जो लाइट निकलती है इट कम्स इन ए कोन। मैं लाइट की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वो हमने देखी हुई है, हमें समझ आती है। इट कम्स इन ए फॉर्म ऑफ ए कोन, राइट? यस सर, डेफिनेट। ठीक है, जो वो कोन है तो उस कोन के अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत सारे एंगल्स हैं उस कोन के अंदर। और वो लेट्स से अगर मैं वापस जाऊं, लेट्स से ये एक मैं पाइप बनाता हूं, ठीक है? उप्स, एक पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, और उसको मैं टॉर्च उसके आगे जलाता हूं, ठीक है? तो ये टॉर्च में से बहुत सारे एंगल्स निकलेंगे कोन के, करेक्ट? यस सर। तो ये यस सर। बहुत सारे इंसिडेंट एंगल्स हैं। यस सर, बिल्कुल। ऐसा ही है, बहुत सारे इंसिडेंट एंगल्स हैं, like this, like oops, कलर चेंज कर लेते हैं। देयर आर मेनी इंसिडेंट एंगल्स है यार, ठीक है? सो व्हाट वुड हैपन, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अगर एक्स एम यहां पर है तो इट इज ट्रू फॉर वन इंसिडेंट एंगल, बिकॉज मेरी इक्वेशन में रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल नहीं, इज जस्ट ए कॉस थीटा आई, जस्ट वन एंगल। सो वो जो मेरी टॉर्च है, जो कि मेरा एंटेना है वेव गाइड का, जो आरएफ वेव दे रहा है, वो इसी तरह रेंज ऑफ एंगल्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एक्सएम के लिए कोई एक एंगल कैप्चर हो जाएगा, और अगर आप एक्सएम बदले को तो दूसरा एंगल कैप्चर होगा, बट स्टिल वेव गाइड ऑपरेशन विल स्टिल बी देयर, बट फॉर अ डिफरेंट एंगल। डज दैट मेक सेंस? So can you repeat this? सो जिस तरह टॉर्च में से लाइट निकलती है ना डाइवर्जिंग, इसी तरह एंटेना में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो भी इसी तरह डाइवर्जिंग निकलती हैं। यू कैन थिंक लाइक दैट, रफली, जनरली स्पीकिंग। हम इसको स्पेशलाइज करते हैं बट टू मेक द कॉन्सेप्ट, जब एक कोन ऑफ वेव्स निकलेंगी तो उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट एंगल्स होंगे, अ लॉट ऑफ रेज मेक अ कोन। डज दैट मेक सेंस, जमशेद? Yes, sir. तो जब बहुत सारे एंगल्स मौजूद होंगे, लेकिन ये जो मेरी वेव गाइड ऑपरेशन है, इट इज ट्रू ओनली फॉर वन इंसिडेंट एंगल, ठीक है? अगर एक इंसिडेंट एंगल ट्रैप होगा ना, उसके लिए एक ही एक्सएम होगा। अगर आप दूसरा इंसिडेंट एंगल इस्तेमाल करोगे, वो एक्सएम बदल जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी विच इज अप, बिकॉज ओके, लेट मी गो बैक, एम टू एफ म्यू एप्सिलॉन cos थीटा आई, बिकॉज एप्सिलॉन अगर मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं आए तो ये कांस्टेंट है, अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं बदली ये कांस्टेंट है, तो अगर एक्सएम बदलोगे तो दिस हैज टू चेंज, थीटा आई हैज टू चेंज to keep the wave operation going, because this equation needs to be respected, because ये equation कहां से आई थी? ये equation था वो मेरा null कहां पर होगा, ऊपर से। so this equation can only be respected, अगर आप xm बदलोगे तो थीटा i को बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है? और ये इसी तरह आप सोच सकते हो, अगर आपने उसी थीटा i को रखना है लेट्स से, तो आप को फिर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल लो आप, बेशक डायल को आगे पीछे कर लो। अगर वो भी नहीं बदलना तो मटेरियल वेव गाइड के अंदर कुछ चीज भर दो, एप्सिलॉन को बदल दो। लेकिन द बॉटम लाइन इज दिस, ये इक्वेशन निकली कहां से थी? दिस इक्वेशन निकली थी यहां से, दैट बीटा कॉस थीटा आई एक्सएम हैज टू बी इक्वल टू एम पाई। ये नहीं कंडीशन बदल सकती। This is the condition. This condition cannot be changed. This condition has to be respected at all times. This is just like your, जो बाकी laws हैं. This is the condition which needs to be true at all times.
ठीक है? Does that make sense? Yes. Okay. सर जी. सर हम ये कह सकते हैं कि हर इंसिडेंट एंगल के लिए जो रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव बन रही है वो एक ही है, क्योंकि वो एक ही है। हर इंसिडेंट एंगल के लिए जो रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव बन रही है वो एक ही है। अच्छा, वो स्टैंडिंग वेव एक ही क्योंकि होने की क्या डेफिनेशन है? सर क्योंकि कौन एक है ना, इंसिडेंट जो आ रही है फिर रिफ्लेक्ट जो कर रही है, कौन या एक है, तो जो रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव है। या यू कैन थिंक लाइक दैट, यू कैन थिंक लाइक दैट, अगर मुझे आपकी बात सही समझ आई है तो। हाँ ठीक है, जी। लेकिन देखो, द ओनली थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, द ओनली थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक के बीटा कॉस थीटा आई एक्स इज इक्वल टू एम पाई, दिस नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। ये सब कुछ जो मैंने निकाली है कंडीशंस, वो इस इक्वेशन से ही बाय प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिखी हैं। ठीक है, दिस नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। ये वॉयलेट नहीं हो सकती, दिस कैन नॉट बी वॉयलेटेड, दिस कंडीशन कैन नॉट बी वॉयलेटेड, दिस नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, एंड दैट डिक्टेट्स द थिंग्स। और आपको यहाँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स एंड देन आई विल स्टॉप delivering the content and I will go for the demo. Quickly you can see this thing that from this equation, you know, xm की जगह हम कहते हैं जो वेव गाइड का जो डिस्टेंस आपस में ए पैरेलल प्लेट्स का जो डिस्टेंस है, a is equal to, you know, let's say वही है ना m over 2fa mu epsilon cos theta i. So no fa नहीं, so अगर आप a को चेंज कर बढ़ाओगे तो cos theta i needs to be increased, sorry, cos theta i needs to be decreased, कंसिडरिंग कि ये कांस्टेंट हैं सारे। cos theta i needs to be decreased, और आपको पता है cos का ग्राफ कैसा होता है, अगर cos theta i needs to be decreased, इसका मतलब है theta i needs to be increased. So as a increases, theta i increases. I think this is more than enough for today. और एक मैं बात जरूर आपको कहूंगा यहाँ पर, और अगली क्लास में मैं ये दिखाऊंगा एनिमेशन आपको कुछ, कि जो पैरेलल प्लेट वेवगाइड का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज नॉट सम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आपके जितने इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ना, जिनके अंदर एंटेनास लगे हुए हैं, या आपके, ऑलराइट, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये बात अभी चल रही है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, यू बेसिकली look over them by assuming them as a parallel plate waveguides, and उसको कहते हैं microstrip lines या microstrip antennas. I'm going to show you some figures very quickly. I should have them. Strip. अच्छा, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास क्या होते हैं, क्या आप दोबारा बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको दिखाने लगा, मैं आपको ठहर जाए, ये शेयर नहीं हो रही ना स्क्रीन, सो लाइक दिस। ये जितने आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन के अंदर एंटेना लगा हुआ है, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। इसके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द पैरेलल प्लेट वेवगाइड जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वही उन्हीं लाइंस के ऊपर होते हैं। एज्यूमिंग जो फ्रिंजिंग है उसको आप इग्नोर कर दो, जैसे कैपेसिटर होता है। दीज आर ऑल सर्किट्स, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, दे ऑल आर फॉलोइंग दिस पैरेलल प्लेट वेवगाइड मॉडल। ठीक है, दिस इज नथिंग एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज मोर ऑफ द मोर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको प्लीज आप लोगों ने अगली क्लास में जो आ रहे हैं, इसको काइंडली आप लोगों ने रिव्यू जरूर करना है यहाँ तक, ताकि क्योंकि लास्ट क्लास होगी, आई नीड टू फिनिश माय, जो मेरी बात है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन किसी हद तक हम पहुंच गए हैं, तो इट्स अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट। सो आई एम गोना शो यू अ क्विक डेमो of this waveguide. ठीक है, let's see, hold on, let me, Adi, come on. So what I'm going to show you, I'm going to show you a waveguide. All right,
I'm going to show you a waveguide. हदी जरा आपने वो पकड़ना है लैपटॉप, ये पकड़ना है आपने ताकि मैं दिखा सकूं. आपने इसको इमेज करना है. यहाँ से पकड़ो, कीबोर्ड उतार लो. हाँ ठीक है. ऑलराइट ओके. मैं जरा लाइट भी ऑफ करता हूँ, ज्यादा कूल इफेक्ट आएगा. ऑलराइट. अच्छा नहीं अभी तो नहीं. यार दिखा दो कीबोर्ड तो. उतार. आपको हाँ उतारो कीबोर्ड. कैसे उतारते उतारो हैं? उतारो उतारो. उठाओ इसको. करो इसको. उठाओ इसको. उठाओ इसको. इधर करीब लाओ. तो मेरे पास क्या है बच्चों? हाँ लेट्स सी ये डेमो कैसा होता है. अच्छा ये है एक बॉटल है फुल ऑफ वाटर और मैंने इसके अंदर ना एक ये सुराख किया हुआ है. ठीक है, नजर आ रहा है सारों को? राइट. आपको बोलेगा तो मुझे पता चलेगा ना. आ रहा है नजर? यस सर, नजर. अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको जब मैं इसमें से ये स्टूडेंट निकालूंगा ना पानी फ्लो करेगा और ये मेरा सोर्स है, ये मेरा लेजर पॉइंटर और मैंने इस वेवगाइड को यहाँ से एनर्जाइज करा और आप देखोगे वो ट्रैप हो जाएगी लाइट इस पानी के अंदर. जहां जहां पानी जा रहा है वहां ये लाइट जाएगी. लेट्स सी मैं कितना मैं कामयाब होता हूँ. सो आई एम गोना स्विच ऑफ द लाइट सो दैट यू गाइस कैन सी इट. ठीक है. लेट्स सी. ओप्स. आदि हो इमेज. नहीं नीचे करो आदि. नीचे करो नीचे करो नीचे करो. और नहीं नहीं टिल्ट करो ऊपर से. ऊपर से टिल्ट करो. ऐसे करो. ऐसे करो. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी इट? यस सर, वो नजर आ रहा है. राइट. तो ये पानी जहां जहां पानी जा रहा है और जो cos थीटा इज मैच किए ना वेवगाइड को वो ट्रैप हो में, बाकी लाइट बाहर भी निकल रही है. वो फ्लोर के ऊपर दिखाओ आदि. राइट. सो दिस इज अ वेवगाइड ऑपरेशन. ये आप घर में कर सकते हो. एक लेजर पॉइंटर पकड़ के ना एक पानी की बोतल के साथ यू गाइस कैन डू दिस थिंग. सी दिस नजर आ रहा है आपको? यस सर. नजर आ रहा है. ऑलराइट. सो लेट मी एक्चुअली दैट वाज अ शॉर्ट. वो किधर गया आदि? oops the mess. ऑलराइट. मैं अभी आपको एक चीज और छोटी सी दिखानी है. Just one second. इसे उतार दूं चार्जर को? So that was on the waveguide. इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था that इस तरफ ले जाओ. इसके अंदर क्या हुआ था? ऊपर करो ऊपर करो. So my son is helping me out. इसके अंदर क्या हुआ था that the what जो मैं इसके अंदर लाइट शूट कर रहा था ना, so that was getting trapped. अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ, स्मॉल डिटेक्टर जो आप लोगों को दिखाया था. अभी देखो लेजर पॉइंटर जो है this one. Oops. ये लेजर पॉइंटर उधर वॉल पे दिखाओ आदि. हाँ ये वॉल पे नजर आ रहा है पॉइंट, लेकिन ये जो इसकी ये जो पूरी जो बीम है ना वो नजर नहीं आ रही आपको. राइट. नहीं ना नजर आ रही जो चलती हुई, जो यहां से लेके एक पूरा एक कंटिन्यूअस बीम नजर नहीं आ रही. ऐसा ही है ना? यस सर. अब ये देखो, अब समझोगे स्मॉग आ गई बीच में. देखना क्या होगा. You see? Yes, sir. This is the scattering. That's how the small detectors work. कि यहाँ पर scatter हो गई है and you can वहाँ पे power आपकी कम हो गई है. That's the small thing I want to show you. Actually, these engineering applications. Guys, you are there? Yes, sir. Yeah, it was accidentally switched off. Never mind. So ये भी एक fun हुआ है. I'm not sure कि कितना point makeup हुआ है, लेकिन I tried. Let's see. कोई अब okay, I'm gonna stop recording और आप लोगों के कुछ सवाल हो इसके ऊपर तो I'm gonna answer your questions.